गुड इवनिंग समस्त को आ प्रणाम मध्य। तो फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपेरेसन करुँच आगामी हाई स्कूल टीचिंग एग्जामिनेशन से पेडागोजी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन मुझे आसी तो आम डिस्कसन करवा। तो जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, सांग मानक शेयर करेंगे, वीडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे। ता सहित आमर जदि ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करना डिस्क्रिप्शन एक टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छी जाकि आपण मैंने जॉइन करेंगे। तो जीवा फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामने क्वेश्चन आपण मानक पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल अजम्पशन ऑफ ह्यूमनिज्म। तामाने आपणकर जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रही तो या भितर कोटा आपणकर गोटे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को आपणकर दर्शाऊ नाही। आपणकर पीपल एक्ट विथ इंटेंशनलिटी एंड वैल्यूज। बी रे आपणकर रही all behavior is the result of application of consequence. Discovering knowledge or construct meaning is the central to the learning. Now it is necessary to study the person as whole. कोड़ा करेक्ट आंसर। बहुत सारा पिला कहते ऑप्शन नंबर सी। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी रे आपणकर जदि आम देखा यार करेक्ट आंसर जो ऑल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ द एप्लिकेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। एटा आपणकर कुआ जाइथिला कोउतरे ना आपणकर बिहेवियरिज्म रे कुआ जाइथिला बुझिउची। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए कथा कहबा, ऑप्शन नंबर सी कथा कहबा, ऑप्शन नंबर डी कथा कहबा तो ये सब गुड़ाक आपणकर पार्ट ऑफ द कौन ह्यूमनिज्म। बुझीगला क्लियर समस्ते बुझा पड़ुची। आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन को भल से पढ़व। अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर्स व्हाट डज ए पर्सन नीड टू ग्रो साइकोलॉजिकली। कार्ल रोजर अनुसार जदि आम देखा जदि साइकोलॉजिकल सॉरी आपणकर साइकोलॉजिकली आपणकर ग्रो करने तो कौन रा आवश्यकता रही। प्रथम ऑप्शन अच्छे आपणकर थेरापिस्ट हु यूज एम्पैथी जेन्युइननेस। नेक्स्ट अच्छे अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। तापर कही जॉब दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सी रे आपन को कही ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स। आ गुटे हूँ फैमिली। आ गुटे रही आपणकर ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर कौन हम? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम जो थी कि आपणकर ए थेरापिस्ट हु यूज से आपणकर यूज करा जिवो एम्पैथी जेन्युइननेस आ गुटे हूँ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कथा आपणकर कुआ जाइथिला। ठीक अच्छे क्लियर समस्ते वीडियो गोटे गोटे लाइक करदब आ जो मैंने चैनल में नुआ अच्छा निश्चित चैनल टी को सब्सक्राइब करदब। ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज रॉबर्ट एस वुडवर्थ डिफाइन लर्निंग एज। से कहते लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस डेवलपमेंट चेंज इन बिहेवियर। ना लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ना लर्निंग इज क्रिएटेड एज ए रिएक्शन ऑन डिफरेंट ओकेजन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ लाइफ। ना नॉन ऑफ द अबव। कोटा हम करेक्ट आंसर? किए कह करेक्ट आंसर कौन हम? यहाँ कौटा हम करेक्ट आंसर? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ अनुसार जदि आम लर्निंग कथा कहबा ताले लर्निंग रो आपणकर डेफिनेशन कोटा सैटिस्फाई करूची। कोटा हम करेक्ट आंसर?
तो करेक्ट आंसर जदि आम देखा करेक्ट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी जोटा कि कही से लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस बुझीगला ऑप्शन नंबर बी जो मैंने से करेक्ट आंसर अच्छी तो अकॉर्डिंग टू वुड ओर्थ अनुसार जदि आम कहवा जे से कही एक्सपीरियंस रो रिजल्ट ही आपंकर लर्निंग होता है ठीक अच्छे आग को जा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ व्यूइंग लर्निंग एज ए प्रोसेस जदि आम गोटे लर्निंग को प्रोसेस रूप से देखा ताले तार कोटा गोटे आपंकर बेनिफिट ऑप्शन नंबर 1 आपन को कही इट इज इजियर फॉर टीचर टू असेस द स्टूडेंट लर्निंग इट कैन लीड to more standardized test score now it allows the students to progress at their own pace and develop deeper understanding now आपनकर it makes it easier for teachers to use pre-designed material correct answer कौन हम 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर जदि आम देखा ऑप्शन नंबर आपंकर सी सहित जीव इट अलाउज स्टूडेंट्स टू प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस एंड डेवलप डीपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑप्शन ए इट गिव्स स्टूडेंट्स फ्रीडम एंड प्रमोट सोशल वैल्यूज it is economical and ideal for science work now it trains students for a democratic way of life and sets an intrinsic standard of evaluation now all of the above correct answer kon habo main advantage आपन को पचारिछि प्रोजेक्ट मेथड रो main advantage पचारिछि तो correct answer kon habo समस्त को वेरी गुड इवनिंग करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर जदि आम देखा यार करेक्ट आंसर हूँ ये सबू गुड़ाक आपणकर एडवांटेज भितर आसूची प्रोजेक्ट मेथड रो एडवांटेज भितर आपणकर आसूची कोटा भी आपणकर नेगेटिव नाही बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is a potential benefit of a learner centered approach option A it is easier for the teacher to manage the classroom students develop strong memorization skills now students take more ownership of their learning now there is less noise and disruption in the classroom correct answer kon habo कोड़ा आपनकर करेक्ट आंसर हम किए कहबो किछि रेकॉर्डेड नुहे मिकी मैडम एटा किछि रेकॉर्डेड नुहे मु लाइव अछि तो करेक्ट आंसर कोन हबो तो यार करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हबो जोड़ा होची स्टूडेंट्स टेक मोर ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग हला ऑप्शन नंबर सी जो मान देइचंती समानकर करेक्ट आंसर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ लर्नर्स ऑप्शन ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच विथ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड क्लियर एक्सप्लेनेशन बी रे कहिचे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑप्शन सी रे कहिचे बोथ अप्रोचेस आर इक्वली इफेक्टिव इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग ना डी रे आपन को कहिचे नाइदर अप्रोच इज इफेक्टिव इन प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग करेक्ट आंसर कोन हबो आराम से बीट बाय बीट पढ़ो एवं जमार भी भूल करो नाही कोटा आपनकर प्रमोट करूची गोटे क्रिटिकल थिंकिंग को
तो करेक्ट आंसर जदि आम देखा ऑप्शन नंबर बी आपंकर कही लर्नर सेंटर्ड अप्रोच विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सप्लोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कौटा आपंकर कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे बेनिफिट नुहे बोली पचारिछि। इट कैन मोटिवेट यंग लर्नर्स टू लर्न इन एन engaging manner. It can benefit learners in future classes by helping them retain information. Na it can improve the students test score. Na it can increase the collaboration and communication skills. कोउडा आपनकर बेनिफिट नुहे बोली आपनको पचारिछि। कोउडा या भितर बेनिफिट नुहे बोली आपको पचारिछि। तो करेक्ट आंसर कौन हम? या भितर जदि आम करेक्ट आंसर देखा तो यार करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सहित जीव, जोटा कि आपणकर टेस्ट स्कोर ता आपणकर गुरुत्व दि जाए न था कंस्ट्रक्टिविज्म रे। बुझी हो कि नहीं? नेक्स्ट, what is the main implication regarding constructivism? It is the only effective method for teaching all subjects. Now it is a superior approach to traditional teacher centered method. Now it can be a valuable tool for promoting deeper understanding and engagement. Now it is not suitable for use in elementary classroom. कोड़ा करेक्ट आंसर किए कहबो? सी कहउछन्ती बहुत सारा पिला। तो यार करेक्ट आंसर जदि आम देखा जे सी रे आपणकर जो रही सीटा हूँ आपणकर मेन इम्प्लिकेशन कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकिन जदि आम देखा एथिरे आपणकर डीपर अंडरस्टैंडिंग आउ एंगेजमेंट को आपणकर गुरुत्व दि जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस विथ मोटर रेस्पॉन्स, यूज ऑफ प्रॉपर सिंटैक्स एंड ग्रामर, concepts attached to concrete situation, ना थियोरेटिकल हाइपोथेटिकल आउ गोटे हूँ आपणकर काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। कोड़ा करेक्ट आंसर किए कहब? किए कहब करेक्ट आंसर कौन हम? प्री ऑपरेशनल स्टेज कथा आपको कही। प्री ऑपरेशनल स्टेज प्रथम जो देइछि आपणकर सेंस विथ मोटर रेस्पॉन्सेस, एटा तो आपणकर करेक्ट आंसर आपणकर कौन हम? करेक्ट आंसर जो रही कोऑर्डिनेशन ये आपणकर कही वन थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज आपणकर एथिरे एटा जो रहिला फास्ट आपणकर सेंसरी मोटर स्टेज रे रहिबो। सेकेंडा जो रहा आपणकर एटा हूँ सिंटैक्स आउ ग्रामर कथा आपणकर लैंग्वेज कथा गुरुत्व दि जाइए प्री ऑपरेशनल स्टेज रे गुरुत्व दि जाइए। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज वन थिंग दैट हैपेंस ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज? फास्ट कही सेंसरी क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड, बी रे कहला इमेजिनेशन, आउ गोटे कहला आपणकर इन्स्यूसेशन एंड आर स्ट्रॉन्ग, टाइम स्पेस आउ गोटे कही आपणकर क्वालिटी आर अंडरस्टूड, आउ गोटे कहला हूँ स्ट्राटेजी एंड प्लानिंग बिकम पॉसिबल। केतेबेले कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोउटा आपणकर होता है?
देखा किए कह करेक्ट आंसर बहुत सारा पिलांकर ऑप्शन नंबर सी आसूची तो यार करेक्ट आंसर जदि आम देखा ऑप्शन नंबर सी हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे टाइम स्पेस आउ जो क्वांटिटी रही तो यहाँ को पिला बुझीपारे बुझीपार कि नहीं एवं जोटा कि आपंकर कहुच्छी कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट कथा ये कहुच्छी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर दी 4 की कंपोनेंट्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग जो आमर रेसिप्रोकल टीचिंग रही तो तार चारिटा आपनकर कंपोनेंट रही से चारिटा कंपोनेंट कौन रेसिप्रोकल टीचिंग रे चारोटी कंपोनेंट रही से चारोटी कंपोनेंट कौन सी कहते बहुत सारा पिला तो करेक्ट आंसर जदि आम देखा प्रथमे आपणकर आसीबो प्रेडिक्टिंग तापर आसीबो समराइजिंग तापर क्लारिफाइंग तापर क्वेश्चनिंग जो मैंने सी आंसर देइचंती समानकर भूल अच्छी तो जदि डिटेल्स आम कहबा जे आपणकर रेसिप्रोकल टीचिंग किए देइथिले फादर ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग फादर ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग किए कहबो फादर ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग एथिरे प्रेडिक्टिंग कथा कह जाइछि समराइजिंग कथा कह जाइछि आपनकर क्लारिफाइंग कथा कह जाइछि आ गुटे होछि क्वेश्चनिंग कथा कह जाइछि बुझला मते कमेंट सेक्शन ले कमेंट करी कहबो रेसिप्रोकल टीचिंग रो जनक किए बाय जो रेसिप्रोकल टीचिंग कांसेप्ट आपनकर किए देइथिले नेक्स्ट व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग मुख्य उद्देश्य आपन को पचारिछि रेसिप्रोकल टीचिंग रो मुख्य उद्देश्य पचारिछि टू असेस द स्टूडेंट्स रीडिंग कंप्रेhension ना टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ना टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स रीडिंग फ्लुएंसी ना टू इंट्रोड्यूस न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स किए कहबो यार करेक्ट आंसर बहुत सारा पिला बी कहउचंदी तो यार करेक्ट आंसर जदि आम देखिबा तो यार करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हबो टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रही तार प्राइमरी पर्पज कौन टू असेस ए लर्नर्स करेंट लेवल ऑफ एबिलिटी ना टू आइडेंटिफाई टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट फॉर द लर्नर्स ना टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट ना टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये पचारिछि प्राइमरी पर्पज कौन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रो प्राइमरी पर्पज कौन तो करेक्ट आंसर जदि आम देखा करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी हम जोटा कि आपणकर ये कौन करे गोटे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करे कौन पाई ना फॉर सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट वेरी गुड आंसर नेक्स्ट providing opportunities to all students for achieving their potential irrespective of variation in their abilities is a key objective of day's classroom integrated inclusive special education ना आपणकर नॉन प्रोग्रेसिव एजुकेशन करेक्ट आंसर कौन हम बढ़िया क्वेश्चन आपणकर
से कही अपॉर्चुनिटी दबा ऑल स्टूडेंट्स को सबू पिला माननकु एटी सबू पिला माननकु आपनकर सुजोग मिलुची सबू पिला माननकु एटी सुजोग मिलुची तो करेक्ट आंसर कोन हबो इनक्लूसिव बहुत सारा पिलांकर आंसर आसुची तो करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा इनक्लूसिव इज द करेक्ट आंसर जो माने इनक्लूसिव देइचंती समानकर करेक्ट आंसर अछि नेक्स्ट Which of the following learning disabilities impacts an individual's ability of balance, manual dexterity, out of hand-eye coordination? कोडाब डिस्फासिया डिस्प्राक्सिया डिस्काल्कुलिया डिस्लेक्सिया करेक्ट आंसर आपनकर डिस्प्राक्सिया कारण हैंड आई कोऑर्डिनेशन ता सहित आपनकर एबिलिटी ऑफ बैलेंस कथा भी एठी कुआ जाउछि बुझला जो माने डिस्प्राक्सिया देइचंती सेमानकर करेक्ट आंसर अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ क्रिएटिविटी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी कन्वर्जेंट थिंकिंग हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ना नोबेल इनोवेशन आइडियाज एठी आपनको नॉट कहिची तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम बी 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 आपनकर क्रिएटिविटी रे डाइवर्जेंट थिंकिंग टा आपनकर आस्था है नॉट कन्वर्जेंट थिंकिंग अरे क्रिएटिविटी टा प्रमोट करिता है आपनकर डाइवर्जेंट थिंकिंग inclusion of students with visual impairment requires जो माने visual impairment रछंती books with picture and small print na use of tactile and other materials which are embossed na restriction on use of assistive technology na आपनकर use of sign language by teacher and peers तो करेक्ट आंसर जदि हम देखिबा ऑप्शन नंबर कोन हबो ऑप्शन नंबर बी हबो एथरे टेक्टाइल मटेरियल को गुरुत्व दिया जाउची आउ अदर मटेरियल्स व्हिच आर एम्बोस्ड एठी छुई की समान कोन करिवे सिखिबे वेरी गुड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म ऑफ रिलेटिव पोजीशन इन ए ग्रुप specific instructional objectives specific learning difficulties na mastery learning तो करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर एथिरे आपनकर ऑप्शन नंबर 4 हबो मास्टरी लर्निंग को आपनकर गुरुत्व दिया जाए द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बहुत बढ़िया शक्तिदीप बहुत बढ़िया सठिक आंसर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इन द 7th ग्रेड टेक्स्ट बुक इज व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड ये जो क्वेश्चन आप गोटे की क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चन
करेक्ट आंसर जदि आम देखा एटा गोटे क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो थे कि गोटे सिंगल आंसर आपंकर रहा नेक्स्ट an anecdotal record should be dash and the objective report of an incident exactly happened एटा किए कहबो करेक्ट आंसर किए कहबो करेक्ट आंसर जदि हम देखा ऑप्शन नंबर 3 हम जोटा ब्रीफ हम आउ कंसाइज हम बुझला ब्रीफ हम ब्रीफ ब्रीफ आ कंसाइज मैनर रे आपन कर रहइबो एनेक्डोटल रेकॉर्डटा हला नेक्स्ट if you are planning to teach the different states of India in class 6 then you need to know whether the students are well conversant in using the atlas. This statement is related to which phase of assessment for learning? Formative assessment, diagnostic assessment, only one, na both 2 and 1 and 2, na neither nor 1 or 2, na only 2. केवल आपंकर हम यहाँ कौन फॉर्मेटिव यहाँ बोथ हम आंसर यहाँ आंसर भूल अच्छे यहाँ बोथ 1 and 2 हम यहाँ बोथ हम यहाँ आंसर भूल अच्छे बोथ हम while giving written feedback in assessment for learning which of the following point need to be taken care of? Don't jump straight to error, praise fast, encourage the students to make correction, don't simply write the correct answer spelling and so on. तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ये आपंकर बोथ हम which of the following statement are indicative of formative assessment कोटा आपंकर फॉर्मेटिव असेसमेंट रो इंडिकेटिव कहिछि आराम से को कौन हम करेक्ट आंसर सी बहुत सारा पिला दौरान तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम ए बी ई नेक्स्ट व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एमसीक्यू फॉर असेसमेंट एमसीक्यू यूज करिवार कोनटा बेनिफिट रहउची एमसीक्यू यूज करिवार कोन बेनिफिट रहउची they are more time consuming to grade than open ended question
they are more they are more sus- they are more susceptible to guessing than true or false question. Now they can score objectively and reliably. They are better at assessing higher order thinking skill. तो यार करेक्ट आंसर जदि आम देखा ऑप्शन नंबर सी हम दे कैन बी स्कोर्ड ऑब्जेक्टिवली एंड रिलायबली वेरी गुड which of the following is not an advantage of using MCQ for assessment? They can cover a broader range of content in shorter amount of time. They can be easily adapted to different learning objectives. Now they can provide immediate feedback to students. Now they are effective at measuring students' writing skill. ऑप्शन नंबर डी अब यार करेक्ट आंसर होला नेक्स्ट व्हाट इज वन वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ MCQ फर्स्ट ऑप्शन use vague and ambiguous language in the answer choice, make all the answer choice similar in length and wording, include only one placeable choice. Now use clear and concise language and provide distractor options that are relevant to the question but incorrect. D very good. D अब यार correct answer. What is the main purpose of a blueprint in education? Blueprint ର main purpose पचारिछि किए कहबो एटा करेक्ट आंसर कोन हबो ब्लूप्रिंट रो मेन पर्पज रहउची टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट सिस्टम एट ए कोर्स लेवल What are the three components of a blueprint? Learning objectives, assessment strategy, आउट हूँ ग्रेडियंट जो आपंकर ग्रेडिंग क्राइटेरिया तापर कही करिकुलम स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज आउट हूँ स्टूडेंट ग्रुपिंग नेक्स्ट आपन को कही क्लासरूम रिसोर्स टेक्नोलॉजी टूल आउटे प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी आउट रही असेसमेंट टास्क रूब्रिक आउट हूँ फीडबैक मेकानिज्म ऑप्शन नंबर ए हम जोटा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स असेसमेंट स्ट्रेटेजी आउ गोटे हूँ आपणकर ग्रेडिंग क्राइटेरिया
What are the some benefit of using blueprint in education? ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर जोड़ा हूँ सब गुड़ाक आप ठीक अच्छे थैंक यू ये थिला आपण मानक पई किछि क्वेश्चन तो क्लास टे केमित लागला निश्चित कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबो सांग मानक शेयर करिवो आउरी ए बेला क्लास जदि चाहूच आम टेलीग्राम चैनल में जॉइन करिवो तो निश्चित भाव में यार पीडीएफ मध्य आपण माने सेठ पाई जिवे थैंक यू।